ठीक है। नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आमर आउ गोटे नुआ सेशन रे आमे आउ किछि ग्रुप ऑफ एमसीक्यूज डिस्कशन करबा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऊपर तार एमसीक्यूज जा सब टॉप एमसीक्यूज अछि से सब ऊपर डिस्कशन करबा। तो मेक श्योर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी काहेकि ना ऑलरेडी तम मानकर नोटिफिकेशन आसी गलानी यू मस्ट बी नोइंग हला तमाने समस्त जानि थेबे तमानको नोटिफिकेशन आसी गलानी एग्जाम केबे हबो। तो एबे आ जम्मा भी डेरी करबानी जे कोनोसे भी सेशन होची जेमिति भी क्वेश्चन होची जहां भी होची जते अधिक रो अधिक हबो सते अधिक क्वेश्चन सॉल्व करे चेष्टा करबा हला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी टिके लेट हे गला सिस्टम स्टार्ट कला टिके टाइम लागिला। गुड मॉर्निंग बबीता मामाली स्मृति रितांजलि शुभश्री यस यस अंकित ठीक अछि। तो स्टार्ट करबा एबे क्लास स्टार्ट करबा। आजिरो क्लास टिके डिफरेंट रहबा हमर अन्य सब सेशंस गुडा को अपेक्षा काहे कि ना आजिरो क्लास रे हम किछिटा थ्योरी मध्ये आरंभ करबा हैना किछि थ्योरी मध्ये पढी करी आरंभ करबा। थ्योरी पढिबा माने किछि वन लाइनर्स गुडा को देखिबा जो वन लाइनर्स गुडा को की तार कॉन्टेक्स्ट रे ही हमर सब क्वेश्चंस गुडा को आगु अछि हैना। तो इट विल बी बेटर फॉर यू तमाना पई बोली बेटर हबो बेटर तमे रिकॉल करि परिबो बेटर जानि परिबो हैना आउ तमा मानकर रिवीजन मध्ये एके संगे हे जिवो। एंड आफ्टर दिस क्लास आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विथ यू सो दैट तमानकर रिवीजन पई बोली एटा निहाती हेल्पफुल हबो ठीक अछि। तो स्टार्ट करबा आउ डेरी करबानी ऑलरेडी लेट हे सालानी हैला ऑलरेडी लेट हे सालानी। तो समस्तंकर ऑलरेडी अच्छा आउ गोटे जिंस मते समस्त जानि थेबो तमानकर नोटिफिकेशन आसी गलानी हां 22 सितंबर और 23 सितंबर रे पांचटा शिफ्ट रे माने 22 सितंबर 22 सितंबर रे हमर तीनटा और 23 सितंबर रे दीटा शिफ्ट रे एग्जाम हबो। तो मेक श्योर कि तमानकर जो एडमिट कार्ड आसीबो से अनुसार तमे माने अकॉर्डिंगली परफॉर्म करिबो ठीक अछि। यस यस ठीक अछि। तो चलो फर्स्ट आरंभ करिबा। देखो फर्स्ट किछि एग्जाम फैक्ट्स क्विक फैक्ट्स के फर्स्ट देखि देबा तापर हमें क्वेश्चन सॉल्व करिया आरंभ करिबा ठीक अछि। देखो फर्स्ट आजमा आजमाटा भी कौन होची एडा होची गोटे हमर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ता जोटा की एलर्जिक इन्फेक्शन द्वारा ही थाउची एलर्जी द्वारा ही थाउची ठीक अछि। एंड वेरिएबल और यूजुअली हमर रिवर्सिबल थाए रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ठीक एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन सहित माने ब्रोंकियल ट्रैक्ट हमर कंस्ट्रिक्ट हे जाउची आजमा रे जा द्वारा कि हमर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखा जाउची बेटर वे रे हमें ब्रीदिंग ता हमें करि पारने बेटर वे रे ब्रीदिंग ता करि पारने। तापर आसिला सीओपीडी हला सीओपीडी परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन स्पाइरोमेट्री इज इंपोर्टेंट फॉर इट्स कंफर्मेशन स्पाइरोमेट्री द्वारा हमें जानि परिबा जे हमें माने कंफर्मेशन करि करी जानि परिबा ठीक अछि। तापर आसा नेक्स्ट तापर नेक्स्ट ओके नेक्स्ट हला chronic bronchitis reproductive cough for 3 months up to year for 2 consecutive year 2 वर्ष जाय जति हमर लगातार chronically cough रहुची ताहले एरा होची हमर कहार कंडीशन chronic bronchitis कंडीशन। एम्फाइसेमा जोडा कि हमर alveolar wall रो डिस्ट्रक्शन हे जाउची ए जगह रे आ इलास्टिक रिकॉइल जो इलास्टिसिटी ता हमर रहुची रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे सेटा मध्ये लूज हे जाउची। एम्फाइसेमा होची गोटे इमीडिया कंडीशन जोटा कि सिगरेट स्मोकिंग जो जनरेट हे थाए आ गोटे पर्टिकुलर प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन बोली गोटे पर्टिकुलर प्रोटीन अछि हम बॉडी रे जोटा को कि हमें हेल्प जाहर की हेल्प नेगी हमें एम्फाइसेमा को ट्रीट करि पाइबा। एम्फाइसेमा हमरो अल्फा एंटीट्रिप्सिन द्वारा तो ट्रीट हे परची एटा गोटे ह्यूमन प्रोटीन ता सेटा को हमें बायोटेक्नोलॉजिकली मध्ये प्रोड्यूस करि गिरी हमें तार मार्केटिंग करछे एम्फाइसेमा को ट्रीटमेंट करिया पई बोली सेटा हमर गोटे वेल नोन मेडिसिन ता मध्ये हला। तापरे नेक्स्ट आसो टीबी ड्रग आइसोनियाजिड ठीक अछि आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिस्क pyridoxine is associated supplementation एडा होची हमर सप्लीमेंट ता निया जाई परिबो। नेक्स्ट इथानब्यूटॉल optic neuritis of color vision changes ପାଇଁ बोली इथानब्यूटॉल rifampicin orange red discoloration of the body fluids pleural effusion fluid in the pleural space रे जतबे fluid रहइबो सेटा हला हमर pleural effusion pneumothorax होची air in the pleural space जतबे air रहइबो pleural space रे सेटा हला pneumothorax fluid रहिले
effusion. Type 1 respiratory failure है hypoxemia. Type 2 respiratory failure है hypercapnia due to ventilatory failure. Venturi mask, controlled or precise oxygen concentration. Paused lip breathing helps prevent premature airway collapse during the expiration. Ebe aso first question. Good morning everyone. Manisha, yes. OSSSC Nursing, Riyansh, Anita, Joshna, Bhavani, Subhashri, Sagarika, Babita, yes. तो चलो क्वेश्चन हम मेरे डिस्कशन आरंभ करिबा है ना. फर्स्ट क्वेश्चन, a patient with bronchial asthma develop sudden wheezing and dyspnea. Which pathological change is primarily responsible for the acute airflow obstruction? Destruction of the alveolar septa, bronchial smooth muscle constriction with airway inflammation, fibrosis of the visceral pleura, loss of the pulmonary capillary perfusion. B, yes. Good morning, Siddharth, Pratima. Option number B is the correct answer. देखो, एटी से हमारे पचार चे कौन ना bronchial asthma, wheezing, dyspnea, pathological response, हमारा acute airway obstruction पाई बोली. जब हमें ए तीनटा जगह ऑप्शन को था देखिए बात हाले इड़ा हमारा restrictive airflow को बुझोचे. Restrictive airflow और vascular tissue damage, permanent ए जिनसों को बुझोचे. जोड़ा कि हमारा भूल ऑप्शन है जो भाई जगह रे. ऑप्शन नंबर बी here will be the correct answer. ठीक है जी. Yes, Jayashree. Good morning, Pratima. Jayashree. Yes. Next answer. Question number 2. Which finding is most characteristic of an acute asthma exacerbation? Expiratory wheeze with prolonged expiration, bradycardia with inspiratory stridor, continuous productive cough with massive hemoptysis, absent chest movement due to the pleural fibrosis. Yes. Question number 2. It is expiratory wheeze. B. Yes. A. Achha. How? Expiratory wheeze with prolonged expiration. एडा होची हमारे acute asthma exacerbation रा. Option number A होची correct answer. Yes, Ankit. Which medication is primarily used for rapid bronchodilator for relief of the acute asthma symptoms? Beclometasone, montelukast, salbutamol, budesonide. एडा होची आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हैला. साल्ब्यूटामॉल जोटा की होची गोटे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगेंस्ट बीटा 2 एगोनिस्ट जोड़ा को कि साबा बोली कहा जाउछ हैला. साबा बोली कहा जाउछ. आ एडा बहुत ही अल्प टाइम भितरे हमर टाइट स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करि परबो हैला. इट कैन रिलैक्स the tight smooth muscles in minutes है ना. बहुत ही अल्प मिनिट भितर से हमारा रिलैक्सेशन करि परिबो. ठीक. Salbutamol. Next question number jiba 4. The major long-term purpose of inhaled corticosteroid in the persistent asthma is to dissolve the bronchial mucus immediately, reduce airway inflammation and prevent exacerbations, replace surfactant in the alveoli, stimulate the respiratory center. It reduces the airway inflammation and prevents the exacerbations. ठीक अछि. हमर corticosteroid गुडाको सबु हमर जहां भी अंडरलाइंग एयरवे इन्फ्लेमेशन सब अछि asthma केस रे हैला
कि हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस एगुड़ा सब आम डिक्रीज करियारे हेल्प कर ठीक अच्छे ये आमर कौन से भी इनफ्लेमेटरी जिनस इनफ्लेमेशन ये सब जिनस को आमर प्रिवेंट करियारे ये हेल्प कर ठीक नेक्स्ट A patient with severe asthma suddenly has markedly diminished or absent breath sounds despite severe respiratory distress. This finding is most suggestive of improving the airway obstruction, silent chest due to severely reduced airflow, normal response to bronchodilator therapy, resolution of the bronchospasm. Resolution of the bronchospasm. Yes. Yes, Lakshmi. Good morning. Good morning, Utkalika. Yes. Chalo. Question number 5. It is silent chest due to the severely reduced airflow. एटा है करेक्ट आंसर है साइलेंट चेस्ट जोटा को कि आमर गोटे मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन टा सिवियर आस्मा केस रे देखा जाउची एठी आमर एयर फ्लो एते लिमिटेड हे जाउची जे आमर ब्रेथ साउंड मते जनरेट होनी हैला ब्रेथ साउंड मते जनरेट होनी आ एटा ही आमर कोन ये करूची आमर रेस्पिरेटरी फेलियर आमर हे जाउची बोली सेटा आमर डिनोट करची एठी आमर कोन से भी वेरी रेस्पिरेटरी इंप्रूवमेंट देखा जाउनी एटी रेस्पिरेशन हमर इम्पेंड हे जाउची धीरे धीरे कमी कमी जाउची हमर अवस्था रे खराब हे जाउची हैला बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 which pulmonary function finding is typically associated with the obstructive airway disease increased FEV1 by FVC3 FVC ratio reduced FEV1 by FVC ratio increased vital capacity only increased diffusion capacity in all cases obstructive disease गुड़ाक जमीती कि obstructive disease आमर को प्रकार disease हे परिबा asthma हे गला COPD हे गला ए सब diseases गुड़ाक ना आमर कोन करछि this cause difficulty in exhalation of the air difficulty in exhaling the air quickly in exhaling the air quickly ठीक अछि तो ए जगह रे कोन होछि आमर FEV1 कमी जाउची गोटे सेकेंड रे हैला गोटे सेकेंड रे FEV1 कमी जाउची आ FEV1 रो माने कोन इट इज forced expiratory volume forced expiratory volume in 1 second आउ एपटे आसिला हमर कोन ना FVC रो माने होची forced vital capacity आर रेशियो टा हमर एठी हमर रिड्यूस हो जाउची ऑप्शन नंबर बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर यस बी हियर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 COPD is best described as a complete reversible airway disorder a disease causing persistent airflow limitation that is usually progressive an acute infection of alveoli only a disorder affecting only the pleural membranes COPD रो माने होची chronic obstructive pulmonary disease जोटा की हमर गोटे chronic not fully reversible airflow limitation हैला not fully reversible airflow limitation ता माने हमर persistently airflow हे limited ही रहिबो हैला persistently airflow limited ही रहिबो एडी ऑप्शन नंबर बी हे जबो करेक्ट आंसर आउ COPD रो माने होची chronic obstructive pulmonary disease ठीक अछि आ एटा जनरली हमर कोन कहले ना क्रोनिक फॉर्म रे थाय हैला क्रोनिक फॉर्म रे थाय अच्छा ए जो क्रोनिक फॉर्म रे रहिबो यस यस प्रतिमा सुश्री जोशना तत्कालिका बी ठीक अछि प्रजना तापर अच्छा जो एटा जो रहउची एटा हमर जनरल टॉक्सिक मटेरियल रो कांटेक्ट रे आसीबा जोगु इन कांटेक्ट विथ टॉक्सिक मटेरियल एमाने हमर कोन होचोंदी ना प्रोड्यूस होचोंदी ए सब डिसऑर्डर्स पुरो सब प्रोड्यूस होच नेक्स्ट the classical clinical definition of chronic bronchitis is productive cough for at least 1 month in 2 consecutive years 3 months in each of the 2 consecutive year 6 months in a single year 2 weeks for 3 consecutive years एटा जस्ट आप पूर्व मध्ये गोटे क्वेश्चन रे हमें देखिथिले ए ऊपर क्वेश्चन गोटे सेटा को देखि दियो कहि दियो B yes it is 3 months in 2 consecutive years हैला 3 months in each of 2 consecutive years
नेक्स्ट क्वेश्चन चलो emphysema is primarily characterized by reversible bronchial smooth muscle spasm, only destruction of the alveolar wall with loss of the elastic recoil, fluid accumulation within the pleural cavity, acute inflammation of the epiglottis. जेतले आमे एटार सब समरी देखिथिले से टाइम रे मध्ये आ ऊपर emphysema ऊपर आमे पढिथिले that it is the destruction of the alveolar wall with the loss of the elastic recoil. आ ए जो जिंसडा होची it is caused due to cigarette smoking जो एटा हमरो देखा जाउची also एटा पई बोली ट्रीटमेंट हला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एटा हला गोटे ह्यूमन प्रोटीन रो डिराइव करके आमे आरो ट्रीटमेंट करि परिबा आ एटा हमरो बायोटेक्नोलॉजिकली मध्ये प्रोड्यूस करा हेची for the treatment of this disease. ठीक अछि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जोडा कि हमर एडी देखा जाउची हला it is caused due to cigarette smoking पाई बोली ए जिंसडा हमर जनरेट करची क्वेश्चन नंबर 10 करो क्वेश्चन नंबर 10 A patient with COPD is taught pursed lip breathing primarily because it increases the respiratory rate, help prevent premature airway collapse during expiration, produces positive intrathoracic pressure during the inspiration only, completely eliminate the carbon dioxide production. It helps prevent premature, yes, B Ankit, yes. It is B, helps prevent premature airway collapse during the expiration. ठीक अछि अच्छा तमा मानक पई बोली गोटे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन गोटे इंपोर्टेंट न्यूज़ समस्तक पई बोली जो माने मध्य नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स माने अछंती तमा मानक नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हे सालानी तमे माने देखिथिबो नोटिफिकेशन तमे मानक मिली जाइथिबो आई गेस हला तमे माने पाइथिबो 22nd सेप्टेम्बर एंड 23rd सेप्टेम्बर ए दी दिन हमर रहउची एग्जाम हैला 2 आवर्स रो रहइबो 22nd सेप्टेम्बर रे हमर तीनटा शिफ्ट परीक्षा होउछ और 23rd सेप्टेम्बर रे हमर दुटा शिफ्ट परीक्षा होउछ करेक्ट तो एबे तम मानक प्रिपरेशन रो पूरा पीक मोड रे आसी जिबा दरकार ए टाइम रे जम्मा भी हमें लैग बिहाइंड करबा कथा नुहे जम्मा भी हमें कोडी भी हमें पछकु हुंचिया कथा नुहे जो जगार भी सोर्स मिलुची जो जगार भी जहां भी मटेरियल्स मिलुची हमें से सब को ग्रैब करिगिरी हमें तार फुल यूटिलाइजेशन करबा दरकार तो एथि पई बोली विद्यासागर क्लासेस तरफ रु जो हमरो नर्सिंग ऑफिसर रो बैच चलीची सेडा अछि ह्यूज डिस्काउंट ओनली फॉर टुडे आजि दिनक पई बोली तम मानकर गोटे ह्यूज डिस्काउंट देखाउची कोन OSSSC नर्सिंग ऑफिसर बैच पई गोटे ह्यूज डिस्काउंट ओनली लिमिटेड फॉर टुडे ऑनलाइन रे जो माने भी एनरोल हेबा पई चाहउचंती सेमानकर प्राइस हमरो आगरु जो थिला हला सेडा सब हमरो ए सब ऑनलाइन जो हमरो बैच थिला सेडा बे हमरो रिड्यूस हेगिरी 999 को आसी जाई छै प्राइस हला माने कंप्लीट सिलेबस जहां भी हमरो नर्सिंग ऑफिसर पई बोली तमरो ऑलरेडी पूर्वरु क्लासेस आरंभ हो जाइतिला तार सब रिकॉर्डिंग मटेरियल स्टडी मटेरियल नोट क्वेश्चन सब किछि 999 रे ओनली हला ऑनलाइन जो माने भी जॉइन हेबा पई बोली चाहउचंती आ ऑफलाइन जो माने भी जॉइन हेबा पई चाहउचंती सेमानकर मध्ये प्राइस 6000 थिला जोडा के रिड्यूस हेगिरी 2999 हे जाइछि हला 2999 हे जाइछि एक ऑफर ता ओनली लिमिटेड फॉर टुडे ठीक अछि एडा को जमारो भी मिस करबनी ए चांस को तम मानक पई बोली बहुत ही इफेक्टिव होबो हला
बहुत लिमिटेड टाइम अच्छी आउ जमार भी डेरी न करी एमती ही क्वेश्चन प्रैक्टिस एमती ही सेशंस एमती ही क्लासेस तुमको जदि दरकार अच्छी ताहले जल्दी एनरोल कर दियो हैला सीट्स बहुत लिमिटेड अच्छी आ ता संगे आज बहुत डिस्काउंट एते ह्यूज अमाउंट रे डिस्काउंट मध्य अच्छी हैला देखो तुमनको एग्जाम 22 सितंबर आज 22 अगस्त ऑलरेडी हे सालानी इट इज जस्ट एग्जैक्टली 1 मंथ एक्जाक्टली 1 मंथ अच्छी तो से बोली मेक श्योर कि एडर पूरा फुल यूटिलाइजेशन करिवो आउ जल्दी रो जल्दी एनरोल करिवो तळे जो दिया हेची हमर गूगल फॉर्म दिया हेची फिल अप करिकरी एनरोल करि परिबो या फिर तमरो जदी अन्य किछि क्वेरीज रहउची ताहले मध्य तमे जो तळे जो नंबर दिया हेची 9337421183 ए नंबर रे तमे कॉल करिकरी मध्य क्वेरी तमर पचारि परिबो हैला तो जमारो भी न डेरी करिकरी मेक श्योर कि get enrolled as soon as possible. Get enrolled as soon as possible. Chalo, ebe next question jiba. Question number 11. The most important intervention for slowing progression of the COPD in a person exposed to tobacco smoke is routine antibiotic therapy, smoking cessation, restriction of all physical activity, daily sedative administration. Yes, it is. क्वेश्चन सब सेम थोड़ी आसीबो क्वेश्चन सब सेम केमिति आसीबो जे से ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो हमें प्रैक्टिस करछे से भीतर जेमिति क्वेश्चन आसेला वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड वी नीड टू नो द फैक्ट्स हैला तो इडी ऑप्शन नंबर बी हे जवाब स्मोकिंग सेसेशन नेक्स्ट a patient with chronic COPD has the following ABG value pH 7.36 PaCO2 58 mmHg, HCO3 minus 32 MEq per liter. This is most consistent with uncompensated metabolic acidosis, compensated chronic respiratory acidosis, uncompensated respiratory alkalosis, metabolic alkalosis without the compensation. एडी कोन होची ना pH हमर 7.36 हे जाईची बोली कहले से हमर नॉर्मल रेंज भितरे ही पडुची हैला तो एडा हमर नॉर्मल आडू गला तो फुल्ली कंपेंसेटेड एसिडोसिस को बुझेला जेतेबेले हमर 58 mmHg कथा कहूचे हमें PCO2 वैल्यू सेडा रे हमर नॉर्मल PCO2 वैल्यू डा हमर पाखा पाखी 35 to 40 mmHg 45 mmHg रोची तो एडी हमर बढी ची बोली कहले एडी मध्ये हमर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को हमर से बुझौची हैला तापरे HCO3 जो हमर जो बाइकार्बोनेट लेवल ता 22 रु 26 रहइबा कथा जोटा कि पुनी अगेन हमर एलिवेटेड फॉर्म रे देखा जाउची जोटा कि हमर 22 रु 26 MEq पर लीटर रहइबा कथा एडा हमर एलिवेट हेगिरी कंपेंसेटेड क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ए कंडीशन ता को बुझौची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द मेजर risk factor for COPD especially relevant in low and middle income settings exposure to biomass fuel smoke increased dietary calcium regular vaccination na increased fluid intake COPD कहा पाई बोली सबुडो अधिका रिस्क फैक्टर रे हमर के रहउचंती COPD पाई बोली those who are exposed to biomass fuel smoke yes question number 13 which investigation is used to confirm the persistent airflow obstruction in the suspected COPD electrocardiograph spirometry echocardiograph bronchoscopy in every patient yes a ha हला एडा हे जबा स्पाइरोमेट्री गोटे होची हमर इमितिया इंस्ट्रूमेंट जोटा रे कि हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन मध्ये देखि परिबा आ केते फास्ट होची से इवेंट उडा को से जिंस को मध्ये देखि परिबा केते फास्टर होची से इवेंट उडा को से जिंस को मध्ये देखि परिबा तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ए इंस्ट्रूमेंट हमर देखा जाउची और सीओपीडी केस रे हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करी हमें कंफर्मेशन ता जानि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसो क्वेश्चन नंबर 15 Tuberculosis is caused by Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia. एडा very direct question Mycobacterium tuberculosis एडा गोटे बैक्टीरियल डिसऑर्डर ता बैक्टीरिया द्वारा कॉज होची आ एपटे जदी हमें देखिबा Streptococcus pneumoniae और Haemophilus influenza ये दीटा हमरो कॉज होची कोन कॉज करची निमोनिया कॉज करची ठीक अछि जोडा रे कि हमरो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हे जाउची हैला यस बबीता सुचिस्मिता प्रतिभा लक्ष्मीप्रिया ठीक अछि सागरिका नेक्स्ट द यूजुअल रूट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस
Pulmonary tuberculosis usual route of transmission is fecal-oral transmission, airborne transmission through infection respiratory particles, vector-borne transmission through the contaminated food only. Yes. It is airborne through the, yes, airborne transmission through the infections of the respiratory particles. Next question, answer question number 17. Which finding is most commonly associated with pulmonary tuberculosis? Persistent cough and constitutional symptoms, sudden painless jaundice only, polyuria and hyperglycemia, acute unilateral paralysis. Acute unilateral paralysis. It is persistent cough and constitutional symptoms. अब ये जो हमारा tuberculosis बट TB सहित हमारा chronic cough associate ହେଇକି ଅଛି 2 to 3 weeks जाए जदि हमारा सी हमारा chronically बा persistently present रहिला ता संगे रे अन्य constitutional symptoms जेमते कि sweat, fever, weight loss ये सब जिनसे हमारा देखा जाउची ताहाले एडा होची हमारा suspected TB. Next question. A patient receiving anti-tubercular therapy report difficulty distinguishing red and green color. Which drug is most likely responsible? Isoniazid, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide. कौन होगा? Question number 18. Question number 18. Suryakant? A? Okay. एडा रे हमरो कोन होची आंसर हे जेबो ethambutol हैला ethambutol आ ए जो ethambutol डा एडा गोटे वेल नोन डोज डिपेंडेंट ऑप्टिक न्यूरिटिक टा हैला dose dependent optic neuritis आई बोली एटा मेडिसिन दा ए ड्रग टा ठीक अछि जोटा कि हमर विजुअल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देबा एडवर्स इफेक्ट हमर जो विजुअल एक्टिविटी जो डिक्रीज हे जाइतिबा बा इंपेयर्ड ग्रीन आउ रेड कलर ब्लाइंडनेस जो देखा जाउचे हमर से कंडीशन रे हमें इथाम्ब्यूटल नहीं परिबा है ना इथाम्ब्यूटल नहीं परिबा ऑप्शन नंबर सी ही जबो करेक्ट आंसर. Next question number 19. Pyridoxine supplementation is particularly associated therapy using isoniazid, ethambutol, streptomycin, rifampicin. Question number 19. Yes. Okay. Eye toxicity ପାଇଁ ବୋଲି responsible. See. एडा हबा question number 19 दा हबा कोन isoniazid. Isoniazid pyridoxine supplementation हमरो को थेरेपी ପାଇଁ बोली isoniazid ପାଇଁ बोली हैला isoniazid कोन कहूची it blocks the activation of the B6. It blocks the activation of vitamin B6 जोटा कि अल्टीमेटली हमरो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर परथांता पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर परथांता ठीक अछि तो ए जो पेशेंट माने हमरो आइसोनियाजिड नो चंदी से माने डेली पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंट भी रिसीव कोचन टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट्स. Next, a characteristic effect associated with rifampicin is permanent blue discoloration of the skin, orange red discoloration of the body fluid, severe hypoglycemia in all patients, green discoloration of the urine. Yes, peripheral peripheral neuropathy औषधि ପାଇଁ बोली pyridoxine देबा. Question number 20. रिफैम्पिसिन जो दिया जाउची ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एडा पई बोली हमरा दिया जाउची ठीक अछि इट कॉजेस हार्मलेस ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन कोन करची ये हार्मलेस लिखि दो हार्मलेस ऑरेंज रेड discoloration of urine, saliva, tears, sweat. A condition लिखा जाउची. Question number 21. The most important nursing instruction for improving tuberculosis treatment success is stop medication as soon as symptoms disappear, ensure adherence to the complete prescribed treatment regimen, take antibiotic only during the fever, avoid all physical activity permanently. कौन करा जेबो ए केस रे? Yes, Rasmi. 21. We need to ensure adherence to the
कंप्लीट प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट रेजिमेन हैला हमें पूरा कंप्लीटली जो रेजिमेन रे बा जो प्रिस्क्रिप्शन दा अच्छी से अकॉर्डिंगली ही से जिंस को ही अध्ययन करके रहबा କଥା pneumonia primarily involve the inflammation of the pleural cavity only alveoli and lung parenchyma diaphragm only tracheal cartilage only yes yes very good next it is alveoli and the lung parenchyma जोड़ा functional space टा हमरो lungs रो सेटा और ता संगे alveoli जोड़ा हमरो pneumonia हमरो cause करछि majorly हमरो lower respiratory tract को infection करि दिए pneumonia which is caused by a bacteria known as Haemophilus influenza and Streptococcus pneumoniae. Next question number 23. Which assessment finding may suggest worsening hypoxemia in a patient with severe pneumonia? Increasing confusion or altered mental status, increased appetite, improved exercise tolerance, increased urine concentration only. Yes, question number 23. It is increased confusion or altered mental status. Increased confusion or altered mental status. हाँ, correct. ठीक है. Asa. As the next question, question number 24. The most important nursing intervention to help mobilize respiratory secretion when not contraindicated is maintaining adequate hydration and encouraging effective coughing, strict fluid restriction in every patient, continuous supine positioning, avoiding all movement. So, ए जगह हमें कौन करिवा? We need to maintain adequate hydration and encourage the effective coughing. We need to maintain adequate hydration. है ना? Yes. Next question number 25. Aspiration pneumonia is most likely to occur when protective airway reflexes are impaired. The patient has normal swallowing and cough reflexes. Pulmonary compliance is increased. Hemoglobin concentration is elevated. Question number 25. Question number 25. It is A. Protective airway reflexes are impaired. Protective airway reflexes are impaired. Next question 26. A pleural effusion refers to air accumulation in the pleural space, fluid accumulation in the pleural space, blood clot within the pleural artery, mucus accumulation in the bronchioles. Pleural effusion ro माने होची pleural effusion रो माने हैला fluid accumulation in the pleural space. जतबेले हमर air accumulation ही जाउची pleural space रे एडा को हमर pneumothorax कह जाउची. Pneumothorax कह जाउची. हैला next pneumothorax is defined as देखा आसी गला हैला आसी गला direct question already discussion करि सारचे टिक मारिबा आगु को जिबा. Pneumothorax is defined as the air in the pleural space. Question number 28. In a tension pneumothorax, the immediate physiological danger is mainly due to progressive intrathoracic pressure impairing the venous return and cardiopulmonary function, increased surfactant production, excessive gastric acid secretion, improved pulmonary perfusion. Question number 28. It is? Yes. A. Very good. So, Devta, Ankit, ठीक अच्छी. Progressive intrathoracic pressure impairing the venous return and cardiopulmonary function. Next, chala. Continuous bubbling in the water seal chamber of a chest drainage system may indicate normal lung expansion in every situation, an air leak that require assessment, complete blockage of the drainage tube, excessive fluid intake. Question number 29. Question number 29. It is an air leak that requires assessment. है ना? Bubbling जदि हमर water seal chamber रे होची ता माने कोडी कोडे हमर air bubble रही जाईची. है ना? कोडी कोडे हमर air leak हेची सेति बोली bubbling होची. Type 1 respiratory failure is primarily characterized by hypoxemia with normal or low PaCO2, hypercapnia without hypoxemia, है ना? Metabolic alkalosis only, increased arterial oxygen in all cases. ठीक है. Question number 30. Option number A. Hypoxemia with normal or low PaCO2. Normal or low PaCO2. Next. Type 2 respiratory failure is characterized primarily by elevated PaCO2 due to hyperventilation, increased hemoglobin synthesis, increased oxygen diffusion in alveoli, decreased bicarbonate production only. Question number 31. Question number 31. It is elevated PaCO2 due to hypoventilation. Type 2 respiratory disorder रे हम PaCO2 level टा बढ़ी जाउची आउ ventilation ना हमर कम देखा जाउची. हैला. Next question number 32.
ARDS is characterized by cardiogenic pulmonary edema caused only by left ventricular failure, acute diffuse lung injury with severe impairment of the gas exchange, chronic reversible bronchospasm only, infection limited exclusively to the upper respiratory tract. Yes. Question number 33. Question number 33. ARDS रे कौन होची ना increased alveolar ARDS is characterized by it is acute diffuse lung injury with severe impairment of the gas exchange. है ना, severe impairment of the gas exchange. B. Yes. अब ARDS रा full form कौन? ARDS रा full form कौन? Acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome. ठीक है, प्रतीक्षा, अनीता, मंगल, चंदन, सुश्री, अनीता, प्रतिमा, सत्य, शुभम. Next. A key pathological feature contributing to severe hypoxemia in ARDS is increased alveolar capillary permeability, increased elasticity of the alveoli, complete bronchodilation, increased pulmonary inflammation. Question number 33. Question number 33. ARDS रे कौन होची ना alveolar capillary membrane हमर permeability increase हो जाउची जा द्वारा कि protein rich fluid उडा को सब alveoli द्वारा हमर leak हो जाउची and as a result of which gas exchange हमर problem होची आउ as a result of which oxygen deprivation हमर देखा जाउची. देखो ARDS रे कौन होची हमर ARDS damage the alveolar capillary membrane सेटा हमर increase करि जाउची increase its permeability. तो permeability increase हो जाउची बोली कहले permeability increase हो जाउची बोली कहले एठी हमर protein rich fluid leak into the alveoli. protein rich fluid हमर alveoli को leak करूची जहा द्वारा कि disrupt होची कोन disrupting the gaseous exchange. और फाइनली हमर ऑक्सीजन deprivation देखा जाउची ऑक्सीजन deprivation देखा जाउची. ठीक अछि, तो ए जगह रे जो होउची हमर ARDS रे क्वेश्चन नंबर 33 कोन हे जिवो increased alveolar capillary permeability. alveolar capillary रो permeability बढ़ी जिबा जो alveoli रे जो capillary उडा प्रेजेंट अछि बा एंडोथेलियम दा प्रेजेंट अछि तार permeability बढ़ी जिबा जो protein rich fluid उडा सब हमर लीक हे जाउची protein rich fluid लीक हे गिरी हमर gases exchange रे disruption करोची gases exchange disruption करोची. ठीक अछि, so here's announcement, small announcement, गोटे small reminder small reminder समस्तंकु जो माने मध्ये नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स माने अछंती सेमानकर ऑलरेडी नोटिफिकेशन आसी गलानी हैला आजि पई बोली केवल आजि पई बोली जो माने मध्ये विद्यासागर क्लासेस रे नर्सिंग ऑफिसर बैच रे जॉइन होबा पई चाहउचंती ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड रे आजि दिन का पई बोली एते ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखा जाईची हैला ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखा जाईची ऑनलाइन रे जो माने मध्ये एनरोल होबा पई चाहउचंती ओनली 999 जोटा कि हमरो 1499 थिला प्रीवियस प्राइस ता सेटा अबे हमरो 999 हे जाईची ऑनलाइन मोड रे तमे माने एनरोल हेगिरी तमे प्रिपरेशन स्टार्ट करि परिबो. आ एपटे हमर ऑफलाइन मोड रे 4999 रहिची हमर जोडा कि जनरल प्राइस ता थिला आगुरो जोडा कि रिड्यूस हेकि 2999 हे जाईची हैला केवल आजि दिनक पई बोली ऑफर ता जमार भी मिस करिवनी चांस हैला जमार भी चांस मिस करिवनी. मेक श्योर कि जल्दी एनरोल हे जाओ तळे जो नंबर दिया हेची से नंबर रे तमे कॉल करिगिरी जहां भी क्वेरी अछि जहां भी तुमको डाउट अछि जहां भी पचरि अछि तमे पचरि परिबो. गूगल फॉर्म भी दिया हेची गूगल फॉर्म को मध्ये एनरोल करके तमे जॉइन हो परिबो हैला. अच्छा तो एटा थिला गोटे छोटो अनाउंसमेंट तमानक पई. चलो पुणी स्टार्ट करिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. which device can deliver a precisely controlled oxygen concentration? Venturi mask, simple face mask only, nasal cannula only, non-rebreather mask in every situation. Non-rebreather mask in every situation. तो ए जगह रे हमारा Venturi mask is the most appropriate one. है ना? Most appropriate device that can deliver precisely controlled oxygen concentration. Next question number 35. Question number 35. Which oxygen delivery device is generally capable of providing the highest concentration among the following? Nasal cannula, simple face mask, non-rebreather mask, Venturi mask set at a low temperature.
Yes. Question number 35. It is non rebreather mask है ना एडी हमर हाई कंसंट्रेशन रे ऑक्सीजन को डिलीवर करिया पे बोली से अलाउ करछि प्राय तो हमर 60% to 90% ऑक्सीजन डिलीवरी अलाउ है ना 60% to 90% delivery allowed. Next, the primary purpose of pulse oximetry is to estimate arterial carbon dioxide directly, percentage of hemoglobin saturated with oxygen, serum bicarbonate concentration, pulmonary artery pressure. Question number 36. Pulse oximetry जोड़ा गोटे non invasive device टा non invasive device एरिया में the percentage of hemoglobin saturated with the oxygen a level लागो हमरो देखा जाउची Next, this situation can make pulse oximetry readings less reliable. Poor peripheral perfusion, normal circulation, stable hemoglobin saturation, proper sensor placement. है ना कोडा हमर लेस रिलायबल हबो माने हमें रीडिंग प्रॉपर्ली काढी परिबानी को केस रे काढी परिबानी जते बेले हमर पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन है ना पेरिफेरल परफ्यूजन जते बेले पुअर थिबो से केस रे हमें काढी परिबानी ए परफ्यूजन हमें दे परिबानी नेक्स्ट एबीजे वैल्यू आर पीएच 7.30 पीसीओ2 PaCO2 होची हमर 55 mmHg bicarbonate 24 MEq per liter the interpretation is uncompensated respiratory acidosis, compensated respiratory alkalosis, metabolic alkalosis, fully compensated metabolic acidosis. कौन होबो एडा हमर देखो 35 रो 45 रहबा कथा एलिवेट अछि एडा हमर 22 टू 26 रहबा कथा एडा हमर नॉर्मल अछि एडा मध्ये हमर नॉर्मल अछि ठीक अछि त ए केस रे हमर को प्रकार रहउची को प्रकार कंडीशन कौन इंटरप्रेट करबा हमें दिस इज अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यस सो दीप्ता आशीर्वाद यस अनीता गुड मॉर्निंग मोमिता यस उषा रानी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 एबीजे वैल्यूज आर 7.50 पीसीए2 होची 30 mmHg HCO3 माइनस होची 24 दिस इंडिकेट्स एटा कोन इंडिकेट करछि मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस compensated metabolic alkalosis. Question number 39. ए केस रे कोन हिची देखिलो ए केस रे हमर पीएच रे बढ़ी छि पीसीओ2 हमर 45 रो 45 रहय कथा एडी कमी छि एडा हमर नॉर्मल अछि 22 रो 26 रहय कथा एडा नॉर्मल अछि त ए केस रे एबीजी वैल्यूडा कोन हिजिबो हमर एबीजी वैल्यू कोन हिजिबो इट इज बी यस बी सूर्यकांत बी को लॉक करें respiratory alkalosis next a patient with severe airway obstruction becomes increasingly drowsy and has rising PaCO2 levels the nurse should interpret this primarily as possible worsening ventilatory failure definite improvement in the oxygenation normal recovery for asthma evidence of the metabolic alkalosis only it is possible worsening of the ventilatory failure एडा हिजबो करेक्ट ऑप्शन yes okay correct next question number 41 bronchiectasis is characterized by permanent abnormal dilatation of the bronchi temporary narrowing of bronchi due to allergy only destruction of the pleural membranes acute obstruction of the larynx ब्रोंकिएक्टासिस होची गोटे पैथोलॉजिकल कंडीशन जोटा कि इरिवर्सिबल क्रोनिक डायलेशन हमर देखा जाउची कोडी लार्ज ब्रोंकी ब्रोंकियोल ए सब गोडा देखा जाउची आ एटा इन्फेक्शन आ इन्फ्लेमेशन हेबा द्वारा हमर होची हैला इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन एवडा को सब हेबा द्वारा देखा जाउची तो एडी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर यस अमर प्रतीक्षा यस ए हबो प्रतीक्षा ए हबो हैला 41 टा ही हबो कोडर बी कहू छ ए हो ठीक अछि permanent abnormal dilatation which condition is most strongly associated with excessive production of thick respiratory secretions and recurrent respiratory infections bronchiectasis pneumothorax pulmonary embolism only pleurisy without the lung involvement just अभी जोड़े discussion कर ले bronchiectasis it is bronchiectasis a option is the correct answer next number question number 43 a pulmonary embolism primarily causes impairment of pulmonary perfusion
gastric motility, cerebrospinal fluid circulation, renal filtration only. Renal filtration only. It is A. Yes, Babita, A. It is pulmonary perfusion. है जोटा कि आमर pulmonary embolism, pulmonary perfusion द्वारा एडा आमर associated हेगिरी देखा जाउछि. Next, the ventilation perfusion ratio is most directly concerned with the relationship between air reaching alveoli and blood perfusing pulmonary capillaries, heart rate and blood pressure, respiratory rate and body temperature, hemoglobin and platelet count. Hemoglobin and platelet count. कौनटा देखा जाउछि हमर एडी वेंटिलेशन दा भी आ परफ्यूजन दा क्यू वेंटिलेशन दा भी आउ परफ्यूजन दा क्यू जदि हिसाब रे देखिबा ताहले अमाउंट ऑफ एयर रीचिंग द alveoli आउ अमाउंट ऑफ ब्लड रीचिंग द पल्मोनरी कैपिलरी कोन अमाउंट ऑफ एयर reaching the alveoli by the amount of air amount of blood reaching the pulmonary capillaries. B by Q. A ratio da एडा हमें देखछे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हे जिवो. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हे जिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. Which condition is an example of restrictive lung disorder? Pulmonary fibrosis, bronchial asthma, chronic bronchitis, emphysema. Emphysema. It is pulmonary fibrosis. Next, direct question odaga aur kichi dekhiar nahi edare. In restrictive lung disease, the primary functional problem is generally difficulty expanding the lungs, increased expiratory airway collapse only, excessive mucus production in every patient, complete reversibility with bronchodilators. Complete reversibility with bronchodilators. It is option number A correct answer. Difficulty in expanding the lungs. Difficulty in expanding the lungs. Next, which respiratory sound is most commonly associated with the narrowing of the smaller airways? छोट छोट एयरवे आमर हे जिबा जगु एयरवे उडा स्मॉलर हे जिबा जगु बा नैरो हे जिबा जगु आमर जो साउंड आउ देखा जाउनी हला रेस्पिरेटरी साउंड आमर जो देखा जाउची से जो जिंसडा आमर को कंडीशन सहित एसोसिएटेड हेगिरे अछि को कंडीशन सहित एसोसिएटेड हेगिरे अछि. यस टिके बे क्वेश्चन रो नंबर लिखि के आंसर करियोटे ट्राई करो हला क्वेश्चन रो नंबर लिखि के आंसर करियो ट्राई करो बिकॉज़ आमर से मिस हे जाउची गोटे गोटे. It is wheeze. Wheeze होची कोन high pitched whistling sound. High pitched whistling sound का हला जोटा कि हमरो जनरेट होची ए केस रे जोटा कि जनरेट होची ए केस रे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. Stridor generally suggests obstruction involving the upper airway, pulmonary capillary, pleural cavity, alveolar membrane only. Alveolar membrane only. It is upper airway. Stridor टा हमर सत्तेबेले generally obstruction देखौची हैला. Next, which nursing position generally help a conscious patient experiencing dyspnea breathe more comfortably? Upright or semi upright position, flat supine position in all circumstances, Trendelenburg position, prone position for every respiratory disorder. Prone position for every respiratory disorder. It is upright or semi upright position. Upright or semi upright position ए position टा हमर देखा जाउची कोई को केस रे जतबे dyspnea होची गोटे पेशेंट को ताको कंफर्टेबल ब्रीदिंग पई बोले हमें ए पोजीशन टा को नोचे. Which statement correctly differentiate the asthma from COPD? asthma और COPD भितरे मेजर डिफरेंस टा कॉमन डिफरेंस टा हमें केमिति जानि परिबा. फर्स्ट, asthma always causes reversible airflow obstruction. सिंपल किछ नाही. COPD occurs only in children? No. Asthma usually shows variable and reversible airflow obstruction. Okay. Whereas COPD airflow limitation is generally persistent. ठीक अछि. ए क्वेश्चन टा ठीक है जिवो ऑप्शन टा ठीक है जिवो. बोथ कंडीशन आर identical त नुहे दिरा जगह. ऑप्शन नंबर सी हियर विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी हियर विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक अछि. यस. तो आजिरो क्लास एतिके पई थिला. टोटल आमे 50 टा क्वेश्चन सॉल्व करले. आउ तम पई बोली तम समस्त पई बोली ऑलरेडी गोटे अनाउंसमेंट मो करि साची. पुणी आउथरे टिके रिमाइंड करे दोछि तमगु जो माने मध्य 1 मंथ रहिला तम प्रिपरेशन पई बोली मेक श्योर कि एबेटो प्रिपरेशन आरंभ कर दियो. जो मानको भी माने कोर्स टा पूरा कंप्लीट दरकार हैला से माने एनरोल हेई परिबे कोठी विद्यासागर क्लासेस रे ऑनलाइन मोड रे भी हेई परिबे आ ऑफलाइन मोड रे भी हेई परिबे. ऑनलाइन मोड रे प्राइस टा आज रिड्यूस हेगिरी 1
सॉरी ऑनलाइन मोड प्राइस रिड्यूस होगी खाली ओनली 999 हो जाइए जोटा कि प्रीवियसली थिला 1499 ठीक अछि सेटा एबे हमर 999 हो जाइए ऑफलाइन मोड रे जो प्राइस ता थिला हमर जाइकरी 5999 सेटा एबे कटिगिरी हमर 2999 हो जाइए हैला तो ए 1 मंथ रहिला मेक श्योर कि 1 मंथ भीतर तमर विगरस प्रिपरेशन हे जबा दरकार हैला पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन हे जबा दरकार एंड एज सून एज दिस लाइव एंड्स पुणी आ गोटे लाइव हेबा को जाउची हमर डायबिटिक नर्सिंग ऊपर तो सेइडा रे मध्ये इमिति ही पार्टिसिपेशन देखेबो इमिति ही क्वेश्चन सॉल्व करबा धीरे धीरे एबे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस हमर बढ़िया को पड़िबा हमर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मध्ये हमें करिया सॉल्व करियाडा बढ़िया को पड़िबा बिकॉज़ टाइम एबे बहुत लिमिटेड हे गलानी एबे काउंटडाउन स्टार्ट कर दियो आ आज रे सेशन केमिति लागिला मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणेबो आउ ए ऑफर रो जेमिति तमे फुल यूटिलाइजेशन एबे एबेडु ही कर देबो ठीक अछि थैंक यू सो मच एवरीवन जय जगन्नाथ सी यू